Hello YouTube, welcome to Dr. Riser Learning Point. Kindly subscribe to the channel if you find the videos useful. In this video, we'll study the differences between the left heart failure, that is LHF, and the right heart failure, that is RHF. Now, one thing you should know before proceeding into this topic is that left heart failure presents with more symptoms rather than signs, and right heart failure, we have more signs rather than symptoms. And you must know what is the difference between symptom and sign. If yes, please do comment below. And if not, then also write that I don't know and you want the difference to be known. Okay. So this is a very schematic diagram of the heart. This is the right side of the heart. This is the left side of the heart. This side being the right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. I'm just showing you the basic anatomy. The pulmonary atrium coming out of the right ventricle. The pulmonary veins coming into the left atrium. The aorta which is leaving the left ventricle. Okay. This is the tricuspid valve on the right side. This is the mitral valve or the bicuspid valve in the left side. And same goes for this side as well. Now, in left heart failure, that means there is problem in the left side of the heart. So what happens at this left ventricle, whenever I'm saying heart failure, that is with respect to ventricles only, okay? So when I say left heart failure, that means left ventricle is unable to pump the blood effectively into the aorta. So what will happen? There will be volume overload, pressure ऊपर जाएगा, pressure left atrium आएगा, pressure और ऊपर जाएगा, pulmonary veins में pressure जाएगा, और फिर ये pressure lungs में जाएगा, right? So between pulmonary veins, you have capillaries, pulmonary arteries, and then that go into the lungs, right? So what will be the symptoms? First symptom is dyspnea, that is breathlessness. अगर lungs involved हो गया है, तो सांस लेने में problem होगा कि नहीं होगा? होगा. That is breathlessness. Now, orthopnea and PND. These are very classical symptoms of left heart failure. Now, why this is occurring? Let me tell you. Now, left side of the heart is already failing. वो compromised state में है. Now, in case of orthopnea and PND, what happens? In orthopnea, when you sleep, when you are in supine position, then your venous return to the heart increases. तो हार्ट के पास ज्यादा वर्कलोड हो गया है, हार्ट के पास अगर ज्यादा काम हो गया है तो और भी इनइफेक्टिव हो जाएगा. इनिशियली वो इनइफेक्टिव था, इनिशियली भी लेफ्ट हार्ट फेल कर रहा था. अब जब ज्यादा वर्कलोड हो गया है, जब ज्यादा ब्लड आ गया सुपाइन पोजीशन में, देन इट विल be more ineffective. So what will happen in supine position? The person will feel more breathlessness. That is called as orthopnea. And PND, that is paroxysmal nocturnal dyspnea. This is episodic breathlessness at night. This also occurs because of two reasons. One, the patient is in supine position, so there is increased venous return, increased workload of the heart. And second, what happens is that in your sleeping time, your respiratory centers are depressed. So जब person सोता है तो और भी उसको अटैक आएगा breathlessness का. And if the person gets up, then the respiratory drive will increase and the patient can breathe more effectively. Okay. Other features of left heart failure is sweating, fatigability, palpitations, and pink from the sputum. Now, fatigability क्यों होगा? Because कोई भी disease है, अगर ठीक से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, देन उनके पास एनर्जी नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है, सो ऑब्वियसली दैट पार्ट विल बी फटीग. देयर विल बी पैल्पिटेशंस बिकॉज हार्ट विल ट्राई टू पंप मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, मतलब एक ही सेकंड में उसको ज़्यादा बार पंप करना पड़ रहा है. सो पैल्पिटेशंस धक 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 ज़्यादा जल्दी होगा. पिंक फॉर द स्प्यूटम. why is this occurring? Because see, the blood goes from the left ventricle back to the left atrium, back to the pulmonary veins, और यहाँ पे होता है तुम्हारा pulmonary veins, capillaries and arteries. तो ये तो पूरा चीज़ ब्लॉक्ड है ना, तो लंग्स को कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ करना पड़ेगा. So what will happen? There will be the formation of the collaterals. Okay, that is the bronchial blood vessels. Now, if these bronchial blood vessels break, then that will lead to hemoptysis. That is pink for the expectoration होगा. Now, what are the signs of the left ventricular failure? There will be pulmonary congestion. The same concept goes here. Suppose यहाँ जाके जाम हो रहा है, pulmonary veins, pulmonary arteries और lungs, इसलिए pulmonary congestion होगा. The patient will have Cheyne-Stokes breathing. Means the person will breathe in properly, then again respiratory distress. Again breathing in properly, then respiratory distress. And this is also marked by some few seconds of non-breathing. Okay, the patient will face gallop rhythm. That is S3 rhythm plus tachycardia. Now, what is S3 rhythm or when does S3 rhythm occurs? S3 rhythm occurs when there is rapid gush of the blood from the left atrium into the left ventricle. So suddenly blood यहाँ पे बहुत तेजी से चला जाता है, तो S3 गैलप होगा और उसके साथ साथ टैकीकार्डिया होगा. ओके, एंड लास्टली यू हैव पल्सेस ऑल्टरेंस. दैट मीन्स कभी कभी पल्स में प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कभी कभी वॉल्यूम कम हो जाएगा. एंड दिस इज ऑल अकरिंग बिकॉज ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर. सो वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स: dyspnea, orthopnea, PND, and other slightly vague symptoms like fatigability, sweating, palpitations. But pink for this expectoration is important. And in signs you have pulmonary congestion, basal clefts in the lungs, expectorations, pulses alterans, and gallop. Okay, now come to right heart failure. As I told you, it has more of signs and less of symptoms. What are the symptoms that you can see in right heart failure? This is very vague. That is, person will have lethargy, anorexia, weight loss, vomiting, and upper abdominal pain. What is important here to know is the signs of the right heart failure. Okay, now suppose right side of the heart is failing. ये pulmonary artery है, ये tricuspid valve है, and this is the right atrium. Right atrium में कौन-कौन आता है? Superior vena cava आता है, inferior vena cava आता है, isn't it? This inferior vena cava goes to the lower part of the body. यहाँ पे तुम्हारा portal vein होता है, isn't it? So if the right side of the heart is failing, उल्टा सोचो, यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट करना शुरू करेगा, यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट करना शुरू करेगा, एसवीसी में ब्लड आएगा, आईवीसी में ब्लड आएगा और पोर्टल वेन में ब्लड आएगा, नीचे नीचे ब्लड जाता रहेगा. सो व्हाट विल हैपन इन द लिवर? इन द लिवर you will get soft tender
पल्सेटाइल हेपेटोमेगली, क्योंकि वहाँ पे पोर्टल वेन है तुम्हारा, सब जगह अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो फिर ब्लड एक्यूमुलेट करना शुरू करेगा हेपेटिक वेन्स में, पोर्टल वेन्स में, तो क्या होगा, लिवर का साइज एनलार्ज हो जाएगा, इट विल बी पल्सेटाइल, ओके, एंड इट विल बी सॉफ्ट एंड टेंडर, छूओगे तो फिर बहुत जोर दर्द होगा। नाउ यू गो मोर डाउन मोर डाउन मोर डाउन, यू हैव एक्सटर्नल इलियक एंड इंटरनल इलियक। एक्सटर्नल इलियक इंटरनल नीचे में फेमोरल वेन्स होता है, पूरा नीचे चले जाओगे तो फीट, यू विल गेट फीट, तो सब जगह ऑब्स्ट्रक्शन होता रहेगा, सो यू गेट टू सी बायलैटरल पिटिंग इडिमा। सेम कॉन्सेप्ट दैट राइट हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड, तो बैक प्रेशर होगा, ब्लड तुम्हारा सुपीरियर वेना का इन्फीरियर वेना का वेनस सिस्टम एक्यूमुलेट करेगा, पोर्टल वेन में एक्यूमुलेट करेगा, नीचे फेमोरल वेन में एक्यूमुलेट करेगा, एंड देन दैट विल लीड टू bilateral pitting edema. So this is explained and hepatomegaly is also explained. With the same concept you have SVC के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, तो अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो इधर पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, सो यू गेट टू सी engorged elevated pulsatile jugular venous pressure will be increased. Also you have ascites and pleural effusion, पूरे बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि ब्लड यहाँ पे ठीक से नहीं आ पा रहा है, so that will lead to ascites, that means accumulation of excess free fluid in the peritoneal cavity, and that is ascites, and you will also have pleural effusion, that is accumulation of excess fluid in the pleural space, that is pleural effusion, okay, and you also have right parasternal heave, which is a characteristic finding of the right ventricular hypertrophy, क्योंकि ब्लड यहाँ पे accumulate करेगा ना, इसका साइज बड़ा होते जाएगा, बड़ा, इसीलिए you get to see right parasternal heave. So this is all about the differences of the left heart failure and right heart failure.